Sir, good morning, sir. Good morning to all of you. So, principal sir ज्वाइन करेंगे अभी just हाँ, ठीक है. ठीक है. हाँ विशाल, उसमें आप ज्वाइन करिए. हाँ सर ज्वाइन करिए. ज्वाइन किए हैं ना? हाँ, ये जब चालू होगा आप बताइए थोड़ा, है ना? 11 o'clock के आसपास हो. अच्छा, 11 बोल रहे हैं क्या अभी? ठीक. बहुत अच्छा है, काफी भीड़ है इसमें. देखिए 50. आजकल वो ऑन है. हाँ. लाइट ऑन है.
सुनील सर, वहाँ पे रेडी है आप? Hello. या मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, sir. Good morning. डॉक्टर दिवेश मिश्रा मैम फ्रॉम सिपेट कोरबा मैम। Yes, sir. Good morning. बोलिए। बस मैम, हमारे जो है अभी डायरेक्टर साहब भी ऑलरेडी ज्वाइन है मैम, और साथ में सुनील सर हमारे कोऑर्डिनेटर वहाँ से भी ज्वाइन हो रहे हाँ, हैं। ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल सर को 10 मिनट में ज्वाइन करने बोलूँ। आप बोले थे 11 बजे ज्वाइन कराऊंगी सर हाँ, को। चलेगा हाँ, मैम। 11 बजे 5 मिनट बचे तो एक बार देख लीजिए ओके। सर। नहीं, आप कहें तो अभी भी सर तो आ गए हैं। हाँ मैम, 60 आप देख स्टूडेंट्स लीजिए हैं। स्टूडेंट्स, हाँ, और अगर ज्वाइन करना चाहते तो वी कैन वेट, राइट। ओके 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 5 मिनट ओके हम सर। और वेट कर लेंगे मैम। ठीक। ठीक है, ठीक। ओके।
मैं बता देती हूँ और शुरू कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद फिर क्लासेस भी हो जाएंगे बच्चों की। संजय सर और सुशील सर अभी आए नहीं हैं। सर हमें उनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, वही कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं है ना? मैम। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग सर, ज्वाइन कर लिए हमारे। फाइन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड फैकल्टीज। सुनील सर कोऑर्डिनेट करेंगे। सक्सेना सर गुड मॉर्निंग सर। दिनेश मिश्राम सर, मेरा वीडियो अभी फिलहाल सर ये मैं बाहर हूँ सर, इसके कारण मैं दे नहीं पाऊंगा। सुनील सर स्टार्ट करेंगे। आ गए? नहीं स्टार्ट करेंगे अभी सर, आ गए हैं प्रिंसिपल सर भी। हाँ ठीक, हम लोग ये प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे फ्री होने से। गुड मॉर्निंग सर। सर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सर सभी को नमस्कार। डॉक्टर अवंतिका कौशल मैडम, राजेश सक्सेना सर, डॉक्टर साधना खरे मैडम और जो भी हमारे यहाँ पे मैंने प्रोफेसर ज्वाइन किए हुए हैं अलग अलग कॉलेज से, और जो भी हमारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी को इस आज की इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम का जो हमने इनिशिएशन किए हैं और आप जुड़े हैं, अपने वैल्यूबल टाइम दिए हैं, उसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। सीपेट जैसे आप लोग सब जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये 1968 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका नाम उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स एंड टूल्स था। धीरे धीरे इसका नाम चेंज होकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुआ, और अभी पिछले 2018 से इसका नाम चेंज होकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से बना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के तहत एक संस्था है जो कि सारे भारत में 42 लोकेशंस पर ये काम कर रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य में अभी 2 जगह पे ये स्थित है। एक ऑफिस हमारे रायपुर में है और एक हमारे ऑफिस है कोरबा में। जो बेसिक एक्टिविटीज है सीपेट की, वो स्टार के तहत होता है। स्टार मतलब स्किल, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अंडर द स्किल we are having different skill technology programs. We are providing a lot of skill technology programs. NSQF aligned 38 programs, जो कि बहुत ही हमारे माने जो सोसाइटी में जो लोग एकदम डाउन द लाइन है,
वो 10th से नीचे भी बच्चे जो है, जो दूसरे कोई कोर्स नहीं किए हैं, उनके लिए हम 3 to 6 month स्किल प्रोग्राम करवाते हैं। और उनको टोटली ये प्रोग्राम जो है वो फ्री रहता है, उनको रेसिडेंशियल होता है, नॉन रेसिडेंशियल होता है। और इस प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेनिंग करने के बाद इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 90 to 100% प्लेसमेंट करवाते हैं। इसके अलावा हम एकेडमिक्स प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, बोथ रायपुर और हर मोस्ट ऑफ द सेंटर में होता है। तो उसमें बीटेक प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी है। ये 4 प्रोग्राम मोस्टली हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं रायपुर में। और सिपेट कोरबा में डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी, ये 2 प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं। इस तरह हम एकेडमिक्स प्रोग्राम जो 3 साल की होते हैं, या 2 साल की पीजी डिप्लोमा होता है, या 4 साल का बीटेक होता है, इस प्रोग्राम में जो बच्चे है वो सिपेट की स्टूडेंट के नाम से लेते हैं, कोर्स भी देते हैं। दे टेल कि इट शुड बी सिपेट क्वालिफाइड, मतलब इट हैज बिकम सिनोनिमस विद द प्लास्टिक इंडस्ट्री नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। And to meet the plastic industry need and requirement, our syllabus and curriculum is continuously updated and upgraded based upon the need of the plastic industries. आज प्लास्टिक्स इंडस्ट्री से हम लोग जब पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी में इसको अपग्रेड किए हैं, that means now we are integrating the upstream requirements, upstream need of the industry. That means the petrochemical plants also. आज तक हम जो कर रहे थे वो प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी के नाम पे, दैट वाज बेसिकली द प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज। जैसे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बनने के बाद उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं अलग अलग प्रक्रिया की तरफ, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूशन, ब्लोन फिल्म, और उसका टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें हम पढ़ाते हैं। तो हमारे कोर्सेस सारा का सारा करिकुलम जो है इस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को लेकर डेवलप हुआ है। इसमें कैड-कैम है, इसमें मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग है, मोल्ड डिजाइन है, whether it is a automobile industry, whether it is a white good industry, whether it is agricultural industry, whether it is water and sanitation, whether it is a defense industry, building and construction, जहां भी हम प्लास्टिक के उपयोग देख रहे हैं आज हमारे चारों तरफ, विदाउट प्लास्टिक आई थिंक हमारा लाइफ विल बी टोटली अनइमेजिनेबल। जो whether it is a 5G के अभी बात कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, LCD, LED ये सब बात कर रहे हैं, these are all based upon कुछ ना कुछ प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व है। और उनके लिए जो भी टेक्नोलॉजी हम ट्रेनिंग देते हैं, ये ऑलमोस्ट इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री रेडी मैनपावर जो बनाते हैं, they directly they are absorbed in the plastic industries and petrochemical industries। तो ये हो गया हमारा एकेडमिक्स है। Now coming to the technology support service aspect, ये हमारा एक बहुत बड़ा accredited एक्टिविटी है। जैसे हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज ISO 9000 accredited है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बीटेक प्रोग्राम्स, और डिप्लोमा प्रोग्राम्स आर एफिलिएटेड अप्रूव्ड बाय AICT है। Similarly, our technology support service, in this we provide starting from the concept, जैसे आज के डेट में हम लोग इंक्यूबेशन, इनोवेशन के ऊपर एम्फासिस देते हैं। CIPET has been doing this incubation and innovation startup since last 30-40 years. We are doing this. That means we are inviting the entrepreneurs and we are providing them the basic knowledge, the science and the technology involved behind the plastic products, the plastics technology, and we have all the facilities for that. So we have 4 basic departments, sir, in which first department is the design and development, the concept. Suppose somebody wants to replace a existing material, either it is a metal or it is a ceramics or a textile or a paper, to a plastic product. Then we conceptualize what could be the material for that and what could be the process and how the product can be designed. So we have a design and development wing. We call it whether product design or mold design through different high-end softwares. We do that design of the products. Then we have a manufacturing of mold wing. We call it tool room, where we do with very latest industry model
machineries, CNC machineries and conventional machineries. We design, we develop the mold, dies, and we support the industries by making the molds and dies, and we encourage the entrepreneurs to utilize our facilities. So we have a tool room where we have all type of facilities. My friend Devesh will make a presentation, show the plant and machinery available with us. Then we have a manufacturing wing that we call plastics processing department, where all type of products we are manufacturing and encouraging the entrepreneurs to utilize those machines. And we are also designing and developing products for specifically for certain industries, like in Chhattisgarh recently, sir, continuously we are manufacturing packaging containers for the Bandhan Department of Minor Forest Produce, and continue. They have recently, this month only, we have got an order of manufacturing products for them at a cost of around 20-25 lakhs. So different type of products we manufacture, and we have industry ready machineries in the field of injection molding, blow molding, extrusion, printing, welding, pet blowing, all type of plastic technology we are having. And while we are doing these products, the students are fully involved in all stages, whether it is a product design, whether it is a mold design, whether it is a mold manufacturing in different type of equipments, like EDM is there, wire cut is there, CNC lathes are there, CNC milling is there. Then manufacturing of the product through different manufacturing processes, इंजेक्शन मोल्डिंग हो, ब्लो मोल्डिंग हो, जो भी. एक बार ये प्रोडक्ट बनने के बाद it has to be validated, it has to be tested and verified for the purpose which it was made, whether the characteristics are there in that product or not. So that is done through a testing and quality control department. Our testing and quality control laboratory is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, that is NABL, under the Department of Science and Technology, Government of India. So whatever parameter testing we do here, that test report is accepted throughout the world, not only in India, it is accepted throughout the world because of our NABL accreditation, and NABL is having a traceability to NPL and ILAC, International Laboratory Accreditation Council. So that way, whatever testing we do or whatever quality control we do, it is recognized throughout the world. So in the laboratory, we have very high-end facilities for testing and quality control of 38 BIS, Bureau of Indian Standards. As far as the Indian standard, I say, now for example, let us say SDP pipe is being used in the Jal Jeevan mission. So SDP pipe is produced and its quality is controlled by Indian standard IS 4984 of 2016. Similarly, there are hundreds of products in which Indian standards are there, and these standards are specifying number of tests within the standard, so that the particular product can be verified and its quality can be assured. So when I say IS 4984 for SDP pipes, at least 15 type of tests are to be performed to certify the product that it is conforming to the particular standard. So we have all the facilities, and Bureau of Indian Standard BIS has approved our laboratory in addition to the NABL accreditation. So this is one activity. So all these 4 activities, as I explained, starting from the design development to mold manufacturing, die manufacturing, then manufacturing of the product, and then testing and quality control. I'll just show you, just 1 second I'll take. Now, for example, this is a container which we designed and developed for the particular organization. So a mold has to be developed. It involves two parts. One is the blow molded container and another is the cap which is used. So it requires a blow mold, and this one also requires a injection mold. So we have to design and develop the mold. Then we have to manufacture this product. Now it will be subjected to the testing and quality control as required by the standard. Then only we can certify and we say this is conforming to the standard. So
for any type of product, the government or any agency they are procuring, we provide this inspection and pre-delivery inspection and post-delivery inspection services also, PDI. We call it PDI. So government procurement throughout our country, different state governments are procuring, whether it is a SDP oven sacks, SDP pipes, PVC pipes, aluminum composite pipes, and different type of films as per IS 2508. So throughout the country, at different centers, we are getting those assignments of pre-delivery inspection and post-delivery inspection, where we have more than 150 empaneled inspectors, and they are going to the site, going to the industry, verifying the product, comparing it with the standards, performing the test, and according to the test result, we say whether the product is conforming or not conforming. So these are the technical support services in the STAR, as I was telling, skilling, technology, academics. Then third one is the research and development. CIPET as a whole has 3 dedicated core research laboratories or research centers, one at Bhubaneswar, second one is at Chennai, third one is at the Bangalore. So under the research and development, for that sake, I can say that at each center of 40 centers, we are conducting small different type of research, but these are the 3 centers where we are conducting high-end core research activities. To give you some example, we are conducting research in the areas of e-waste recycling. We are doing research on the plastics composites, nano composites. We are doing research on the biodegradable plastics. We are doing research in the metal plastic composites, different type of composites. And our customers involved, starting from Boeing aircraft manufacturing to many international and national level manufacturing houses, and DST, Department of Science and Technology, and other government agencies. Now, in due course of, and for that matter, we do a lot of research activity and design and development and product manufacturing and supply, entire thing for the Defense Ministry also. We have supplied various type of items under this product development category, and we are continuously upgrading those also and doing it now regularly. Some of our centers, CIPET centers, are also manufacturing components for the AK-47 rifles. It will be very, very interesting to note this. And I myself, I have developed components. I can show you. These are the components. These are very high value added components. What I am showing, it is used in the missile fuse box assembly. 11 components, which was coming. One component was coming for $15 to $20, which we converted and manufactured in India for 7 to 8 rupees only. Starting from 0.3 gram components. They are all materials are involving engineering plastics and very crucial design. And we are manufacturing, and we have supplied. It was an order worth 75 lakhs in 2005 from CIPET Ahmedabad. I performed this, and this is a component which we have designed. It is basically earlier it was made from. You can see here. It is a tear smoke cell. अश्रु गैस की गोला ये है. ये जब भी राइट्स होते हैं, ये पहले एल्युमिनियम में था, and we converted it to plastics, SDP, high density polyethylene. So all these are subject to test and quality control by the client departments. So these are the activities we are performing, and the best part of this technology support service that our students are getting directly industry exposure, and after the completion of their course, they go to the industry with a industry ready experience. So we don't call our trainees as students. We normally call them as trainees, because during the entire period of their study, whether it is 2 years, 3 years, or 4 years, they undergo complete practical exposure. 60% practical, 70% practical, 30%, 40% theory. So when they go to the industry, they have a bright future. They have a very good career. They start with, depending upon their diploma or BTech, they start with a
kind of a graduate engineer trainee, and they can rise up to the level of the vice president and president. Most of our students are in the level of GM, vice president, president in different industries throughout the country and outside the country. So the students get ready experience and exposure in the plastic manufacturing sector within the institute. That is a big point we are telling. And now the purpose of this particular webinar, which has been arranged, is to give this information to the real motivators, to the teachers who are involved in different kind of institutes in the degree colleges, science colleges. So they also must have a exposure and awareness. So this is the purpose which I have told. And I would also like to welcome you teachers, those who are in the field of chemistry particularly, that when we say chemistry, chemistry is the mother science, I accept, for plastic industry. Without chemistry, understanding plastic is very difficult. There are, when we say plastic, normally we think it is plastic polyethylenes or bucket mug, something which is visible in our house. No, it is plastic means starting from the basic plastics of LDP, SDP, PP, polystyrene, etc. Then we have the engineering plastics, we have composites, we have high performance plastics, starting from the carbon fibers, nano composites, etc., which are used in the aerospace engineering, in the missiles, in the rockets, in the hospital, in the medical field. So I welcome all of you. Those who are interested, please visit our testing laboratory, see, and we offer a lot of facilities for those who are doing research. Their MSc final semester, or whether it is a PhD, or you want to do further postdoc, all facilities are available in terms of the plant and machinery, in terms of the testing facilities, in terms of the research data. So we have a very good full-fledged library in both the centers. So you